1st of February, all eyes will be here. What Finance Minister Nirmala Sitharaman says on taxes, subsidies, growth, education, health, crypto, global factors and domestic recovery, every word will be crucial, every word will be analysed. But don't worry, Moneycontrol got your back. Our team will be interpreting every aspect of Budget 2023 and how it impacts your life. What's becoming more affordable? What's becoming more expensive? What are the stock recommendations and expert views? Real-time, minute-by-minute coverage. Hop onto Moneycontrol to have it all. Moneycontrol, the only digital channel to non-stop live stream budget coverage for over 12 hours. Join our experts, analysts and editors from 7:30 a.m. onwards on the 1st of February. Think budget, think Moneycontrol. Good afternoon and welcome back everyone to Moneycontrol live stream. You're watching the closing bell. I'm Santosh Nair. And I'm Yatin Mota. Market made a good comeback after falling sharply intraday. Key Adani shares managed to close in the green, but however, most of the Adani Group shares were under pressure today. Well, a quick look at how the market fared today. The Nifty closing about 60 points higher than its previous close after being down by close to about 150 points at one time during the day. Adani Total, Adani Green shares were down by about 20%. Also under pressure were shares of Adani Transmission and Adani Wilmar. However, the star performance of the day clearly Adani Enterprises, the stock rallying by about 4%. Gujarat Ambuja Cements too made a good comeback, and so did Adani Ports. Barring IT sector, all the other sectoral indices closed in the red today. The India Volatility Index climbed by about 3.3% and now is very close to 18%. Bajaj Finance, Adani Enterprises, Ultratech, Bajaj Finserv and HCL Tech were among the prominent gainers in the Nifty today, whereas IndusInd Bank, Power Grid, JSW Steel, Bajaj Auto and Larsen & Toubro were among the prominent losers. In the FNO section, short build-up was seen in futures of Exide, GAIL, Interglobe Aviation, IndusInd Bank and Bharat Electronics, where long build-up was seen in futures of Intellect, Design Arena, Idea and Bajaj Finance. बहुत ही गहम सिचुएशन में हम बिकॉज किसी का ध्यान नहीं ग्लोबल क्यूज़ में, किसी का ध्यान नहीं अर्निंग्स में, ध्यान है तो सिर्फ दो चीज़ों पे, एक अदानी ग्रुप के शेयर्स, उनका क्लैरिफिकेशन, उनके इंटरव्यूज़ और मार्केट विस्पर, और दूसरी बजट में क्या आने वाला है. तो सैंटो ऐसे फेज़ में हम चले गए हैं मार्केट में जहां ग्लोबल क्यूज़ मैटर नहीं करेंगे, जहां शायद ग्लोबल डेटा फेड क्या कर रहा है वो भी मैटर नहीं करेगा. मैटर करेगा कि ये अदानी एंटरप्राइज का जो एफपीओ है वो किस हिसाब से सब्सक्राइब होता है, कॉल ऑफ होता है या नहीं होता है, रीप्राइस होता है नहीं होता है. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ऑब्वियसली एक क्लैरिफिकेशन अदानी ग्रुप का तो आया ही है, लेकिन फिर भी बाज़ार को थोड़ा बहुत यहाँ एक कहें तो फ्रिक्शन पॉइंट लगता है. एक सेंस ऐसी आ रही है बाज़ार में थोड़ा बहुत ट्रेंड वीक हो चला है, क्योंकि जिस हिसाब से सैंटो भी कह रहे थे करेक्शन काफ़ी डीप रहा है, कोई रिस्पाइट नहीं रहा है. स्पेशली जो अदानी ग्रुप के कैश शेयर्स हैं वहाँ, तो कहीं ना कहीं बाज़ार में डाउट रहता है. और अदानी ग्रुप के चक्कर में सैंटो बैंकिंग स्टॉक्स में भी प्रेशर है. इनफैक्ट एलआईसी को भी आज एक स्टेटमेंट देना पड़ा अपने अदानी के एक्सपोजर को लेके. तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाज़ार टेंस्ड है, और मुझे लगता है अगर ये सब्सक्रिप्शन मूव होते हैं, इशू आपको सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखाई पड़ता है, चाहे एक लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे क्यों ना हो, तब जाके बाज़ार को थोड़ा बहुत चैन पड़ेगा. एंड ऑब्वियसली परसों तो बजट है ही, तो इनटू द बजट कोई भी बड़ी पोजीशंस आपको नहीं दिखाई पड़ रही हैं वायदे मार्केट में. तो मार्केट एकदम लाइट है, और ये जो अदानी ग्रुप में हम जो वॉलेटिलिटी देख रहे हैं उससे भी काफ़ी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब साइड लाइन में चले गए. Clearly, and adding to the pressure on Adani stocks would have been the fact that given that budget is just a couple of trading sessions away, most traders and investors would not want to take any undue commitments. So that also would have contributed to the pressure.
Well, and with that, let's take a quick look at some of the stocks that caught our attention today. Bharat Electronics, this was one of the prominent losers in the mid-cap space, stock down by close to about 5%. The company had reported its third quarter earnings yesterday. A flattish growth in its net profit, just a rise of about 3%. Revenues were up by about 11%, but what clearly would have upset the market is the 336 basis point drop in operating margin. So that is something that market would not have been too happy about. Also, the order wins for FY23, it was expected, the company had guided for about 20,000 crore, but as of December end, the order wins so far, the orders that has been allotted to BEL is just about a shade under 4,000 crore. So the whether it will be able to meet the target for this year, that looks pretty difficult, but there are quite a few things going in favor of Bharat Electronics at this point in time. One is that its order book is close to about 50,000 crores, which is almost 3 times its annual revenues. Also, the export order book at 2,200 crores is also pretty strong. There is a good dividend yield of about 5%. So these are some of the factors in favor of Bharat Electronics. Also, the analyst view that operating margins in the coming quarters should clearly improve. There was pressure on because of higher input prices, that is expected to ease. Also, the execution has been steadily getting better over the quarters. That trend too is likely to continue. Overall outlook on the defense sector is quite positive, but technically at this point the stock looks to be under pressure. It had climbed to a high of about 115 rupees in September, but since then it's been steadily coming off to close at around 88 rupees today. Absolutely, and BEL is one of those stocks which has disappointed consistently in the defense sector. I think Santo, other stocks, if you look at HAL, BDL, for that matter, the companies which are into shipping defense, which is MDL and GRSE, they have done pretty well. BEL का आपने देखा है सेकंड क्वार्टर लगातार ये डिसअपॉइंटमेंट रहा है. ऑब्वियसली होप यही होती है मार्जिन इंप्रूव हो जाएं, ऑर्डर बुक ठीक है, बट समहाउ मार्जिन प्रेशर काफ़ी एविडेंट रहता है. लेकिन मूव ऑन करते हैं BEL से दूसरे स्टॉक्स की तरफ, खास करके AMC स्टॉक्स, क्योंकि सेबी की नज़र अब इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे है. इनको लगता है कि जो बड़ी AMCs है जिनका AUM 50,000 करोड़ प्लस है, जो कमीशंस वो अपने एजेंट्स को पास करते हैं, उस पर थोड़ा बहुत फिर से लगाम लगनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो मार्जिन कैपिंग की वजह से आपको काफ़ी सारे AMC स्टॉक्स आज प्रेशर में दिखेंगे. लेकिन आदित्य बिरला सन लाइफ AMC ये एक स्टॉक है जो फिर से एक बार फोकस में है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है अर्निंग्स में. सेबी का तो इशू है ही, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स कह रही हैं, लेकिन अगर आप रेवेन्यूज देखें तो बिल्कुल फ्लैट थे. ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग फ्लैट था 174 करोड़ के आसपास, और प्रॉफिट 11% नीचे था 223 करोड़ के आसपास. तो कहीं ना कहीं अगर हम बिरला सन लाइफ की बात करें तो यहाँ कंसिस्टेंटली वीक अर्निंग्स आई हैं. मार्केट शेयर भी इनका काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है इन टर्म्स ऑफ द मूव, और ऑब्वियसली क्योंकि इनके पास कोई बैंकिंग चैनल नहीं है जैसे दूसरी AMCs के पास होती हैं, स्पेशली HDFC AMC, क्योंकि एक बैंकिंग पेरेंट होने से आपका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ईजी हो जाता है, वो इसके पास नहीं है. तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट लगेगी, और शायद इसीलिए सैंटो स्टॉक बहुत प्रेशर में था. Yes, overall that has been pretty much the story of AMC stocks for more than a year now. A paradox there, Yatin, because you have on one hand everyone rushing to put money into SIP, mutual fund, yeah. SIP numbers are only getting stronger by the day, but at the same time that seems to be doing precious little to add to the margins of AMCs. And now you have also again SEBI looking to decrease their operating expenses, at least as far as the large mutual funds are concerned. So what do you think, Yatin, could probably change the picture for asset management companies? I think the regulator is quite clear that small investors should make money, they should have minimum expenses. तो SEBI का बहुत क्लियर है, इन्होंने पहले भी एक बार म्यूचुअल फंड के मार्जिन कैप किए थे, और अब ये दूसरा अटेम्प्ट है, क्योंकि बहुत सारी नई नई स्कीम्स वो निकाल के डीलर कमीशंस को बूस्ट करते थे, लेकिन अब शायद सेबी को वो लूप होल पता चल गया है, और न्यूज़ रिपोर्ट्स की अगर आप माने तो बहुत जल्द ये कानून लागू हो सकता है. नंबर 1. नंबर 2, कंसिस्टेंसी भी नहीं है अर्निंग्स में, तो बहुत डिफिकल्ट कहना होगा ये आउट ऑफ द वुड्स कभी आएगा, यहाँ वैल्यूएशन प्रीमियम कब मिलेगा. SIP की ग्रोथ हो रही है, लेकिन कंपटीशन भी इतना बड़ा है मार्केट में, नई नई AMCs बिजनेस करती हुई दिखाई पड़ रही हैं.
इनफैक्ट अगर आप कॉर्न म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने मैक्सिमम AUM अभी लिया है, काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस अपने आप को कन्वर्ट कर रही हैं AMCs में, तो अब ये जो ट्रेडिशनल पुरानी AMCs है इनको कंपटीशन भी बाजार में काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। Not to mention the rising number of portfolio management services Yes. as well, which is also eating into the market share. Well, the last stock on my watch list is Ambuja Cements. Now, the stock was in the FNO ban today, which was also partly could have contributed to the stock doing managing to hold ground, quite volatile, up 10% early in the day, but and then at one point giving up most of the gains and slipping into the negative, and again at closing managing to end in the green territory. Now, Yatin, this is one stock where institutional investors have a fair Yes. bit of holding among all the other Adani Group stocks. More float than normal Adani stocks. Exactly, and over the last 3 quarters, we have been steadily seeing institutional holdings in Ambuja Cements also Yes. Inching up. At the same time, outlook on the cement sector is still positive at this stage, given that the government has committed to spending on infrastructure. So, and also prices have held on pretty well for the last couple of quarters at least. Margin has been a big worry though, operating expenses continue to rise, but on the whole the outlook on cement remains positive despite the last couple of months underperformance. So, this is one stock clearly to keep a close watch for. Some more volatility expected, that is also because floating stock is relatively higher, but clearly something to be kept an eye out for. एब्सोल्युटली, और अंबुजा सीमेंट ऑब्वियसली हमने अदानी ग्रुप तो काफ़ी सारा डिस्कशन में ले लिया। दूसरा स्टॉक सैंटो जो मेरे रेडार पे है वो है कजारिया सिरामिक्स। अगेन ये बिल्डिंग मटेरियल्स, सैंटो ने सीमेंट सेक्टर की बात की, आउटलुक ठीक रहता है, तो बिल्डिंग मटेरियल्स में खजारिया सीमेंट थोड़े बहुत, खजारिया सिरामिक्स माफ़ कीजिएगा, वॉल्यूम्स 1% गिरे Q3 में। प्रॉफिट की बात करें तो 40% डिक्लाइन, एबिटा की बात करें तो 28% डिक्लाइन। कहीं ना कहीं ये जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट हैं, इन्होंने पूरी इंडस्ट्री को परेशान करके रखा है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो सिरामिक्स हो, चाहे वो दूसरे कोई बिल्डिंग मटेरियल्स हो। ऑब्वियसली थोड़े बहुत कॉस्ट आगे जाके ईज होने ज़रूरी हैं ताकि मार्जिन यहाँ से मूव करें ऊपर की तरफ, और ऑब्वियसली बजट हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग और काफ़ी सारी चीज़ों पे फोकस करेगा। तो ये देखना होगा कि आगे सीमेंट और सिरेमिक इंडस्ट्री का क्या आउटलुक रहेगा, क्योंकि बजट पे भी काफ़ी सारा निर्भरता रहता है, क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम्स सरकार चलाती है, जिसके कारण एक बूस्ट मिलने की फिर से एक बार आशा है, वहाँ एलोकेशन बढ़ सकता है, ये उम्मीद है। रिजल्ट्स तो वीक थे और स्टॉक भी काफ़ी वीक था, लेकिन जैसे सैंटो कह रहे हैं कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में सीमेंट का जैसे परफॉर्मेंस देखेंगे वैसे ही सिरेमिक स्टॉक्स का परफॉर्मेंस भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। Well, and with that, it's a wrap on this episode of Closing Bell, but don't go away. We'll be continuing with the live coverage of Tech Mahindra's quarterly results. Keep watching Moneycontrol. You will get more updates, especially for the budget. Thank you so much. Thank you. 1st of February, all eyes will be here. What Finance Minister Nirmala Sitharaman says on taxes, subsidies, growth, education, health, crypto, global factors and domestic recovery, every word will be crucial, every word will be analysed. But don't worry, Moneycontrol got your back. Our team will be interpreting every aspect of Budget 2023 and how it impacts your life. What's becoming more affordable? What's becoming more expensive? What are the stock recommendations and expert views? Real-time, minute-by-minute coverage. Hop onto Moneycontrol to have it all. Moneycontrol, the only digital channel to non-stop live stream budget coverage for over 12 hours. Join our experts, analysts and editors from 7:30 AM onwards on the 1st of February. Think budget, think Moneycontrol.